Hi guys, good afternoon. Can you all see me? Can you all hear me? Quick feedback. All right, so yesterday we spoke about the two most important complications of the peptic ulcer disease. One was your bleeding, another one was perforation. I'll talk about few more miscellaneous ones which are important, are considered to be as complications, right? Another risk factor, or another complication that you can see in a peptic ulcer disease is going to be your gastric outlet obstruction. It is going to be your gastric outlet obstruction, right? Hi, Dr. X. I think we are only the few people who are here because everybody else is either thinking about RCB versus Punjab, or those who are already in that jiffy of what happened for the NEET PG postponement, probably stuck there. Okay, anyhow, we'll make the most of it. We'll try to give the session short also in the same context. Now, as we have discussed it, in a gastric outlet obstruction, this is the esophagus, this happens to be the stomach, and this happens to be the duodenum, right? Usually it occurs when the ulcer which is present in the duodenum, when it heals, right? So obviously after starting the triple therapy, everything eradication, the ulcer is going to heal, and it is going to heal by fibrosis. Now once the ulcer heals by fibrosis, obviously there will be a stricture in the duodenum, and you will see the duodenum is now going to get narrower, right? You will see because of stricture. So this site is strictured. Now because it is strictured, the lumen is getting smaller, right? Now as the lumen gets smaller, obviously here you have the pyloric sphincter which is present here. Let's say this happens to be your pyloric sphincter, right? So the content that is going to go, let's say the food that is consumed will go from here and it goes across here. Now, because there is a stricture at the duodenum lumen gets smaller, so the content cannot pass any further. Now, as the content cannot pass any further, patient is going to have कन्वर हिंदी में ओके गॉट इट बेटा इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे नो वरी अबाउट इट इनफैक्ट वी आर थिंकिंग नो कि काम करते हैं पूरा बीएलएस को रीब्रांड करके ना लाइक वी विल ट्राई टू री स्ट्रैटेजाइज हाउ वी टीच पूरा अब से ना इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद मतलब कि जितने बच्चे हैं जिनसे मैं यूजुअली डेली बेसिस पे चाहे वो टेलीग्राम पे हो या फिर अपने इंस्टाग्राम पे हो जब हम नॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं या ऑफलाइन क्लासेस में सबका एक ही है कि सर ना कि मतलब मोस्टली हमारा जो नॉर्थ वाला क्राउड है वो चाहता है कि हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाएं तो आज से हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा जितना भी एक्सप्लेनेशन वो इंग्लिश में ही रहे ठीक है तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मोटा मोटा कंपोनेंट ये है कि जब भी कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज ना जैसे यहाँ पे एक अल्सर बना हुआ है ठीक है अब ये जो अल्सर है वो धीरे धीरे करके हील होगा और जब वो हील होगा ऑब्वियसली वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हील होता है ठीक है अब जैसे वो हील होगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे फाइब्रोसिस होता है फाइब्रोसिस की वजह से ल्यूमन छोटा उसको नैरो बोलते हैं अब देखो जब डिओडिनम क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज इज मोर कॉमन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम अब जो डिओडिनम की जगह पे जब वो फाइब्रोसिस होगा इट इज गोइंग टू बिकम स्मॉलर द ल्यूमन विल बिकम क्वाइट स्मॉल अब जैसे ही ल्यूमन छोटा या पतला हो जाएगा तो वहां से जितना भी कंटेंट है स्टमक का वो निकल नहीं पाएगा अगर कंटेंट जो स्टमक का है वो निकल नहीं पाएगा तो पूरा कंटेंट वापस यहीं पे जमना शुरू हो जाएगा एंड दिस इज वेयर द कंटेंट इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड अगर ये आगे नहीं जाएगा तो इसको बोलती है कि स्टमक बेटा जब तेरा काम ही नहीं है तो निकल वापस एंड दिस इज नाउ गोइंग टू कम एज वॉमिटिंग ठीक है तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का जो पेशेंट है ना वो आपके पास क्या सिम्टम लेके आएगा ठीक है ये सारे सिम्टम्स खाने के बाद होंगे तो सबसे पहला सिम्टम होगा पेशेंट की जो कंप्लेन होगी देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ colicky pain that is usually in the epigastric region.
there's a colicky pain in the epigastric region. This will be associated with vomiting. ये जो वॉमिटिंग होगा वो सिर्फ गैस्ट्रिक कंटेंट वापस रिफ्लेक्स कर रहा है, सो दिस विल बी अ नॉन बिलियस वॉमिटिंग. इट इज गोइंग टू बी अ नॉन बिलियस वॉमिटिंग. एक तो कॉलिकी पेन, कॉलिकी का मतलब होता है कि ना पकड़ के छोड़ देना वाला दर्द, ठीक है. तो इट इज गोइंग टू हैव अ कॉलिकी पेन, इट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग. वॉमिटिंग क्योंकि हमारा जो बाइल डक्ट है, नीडलेस टू टेल यू, आपका बाइल कहाँ से आएगा, ठीक है. व्हेन यू लुक एट द बाइल डक्ट इज गोइंग टू ओपन एट दिस पार्ट, राइट. दिस इज द साइड वेर यू सी द सीबीडी इज गोइंग टू ओपन अप. तो ये आपके सीबीडी का साइट है. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द डियोडनम है, तो बाइल तो यहाँ पे है. अगर टर्मिनल पार्ट ऑफ द D2 पे आपका अगर बाइल डक्ट ओपन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन तो ऊपर है ना, तो बाइल तो मिक्स होगा नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ नॉन बिलियस वॉमिटिंग. तो कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग विच इज गोइंग टू बी नॉन बिलियस इन नेचर, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी पोस्ट पैरेंड्रियल. खाना खाने के बाद पेट फूलता है, तो देयर इज पोस्ट पैरेंड्रियल, दैट इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, राइट. सो इट इज पोस्ट फीडिंग, it is post feeding abdominal distension. There will be post feeding abdominal distension is noticed, right. Now, to evaluate this condition, when you're looking for the investigations, for the investigations you can perform a barium meal. आप बेरियम मील कर सकते हो. You can do an upper GI endoscopy to conclude the diagnosis itself, ठीक है. तो मील कर लिया एज वेल एज आपने एंडोस्कोपी कर ली टू लुक एट द स्ट्रक्चर. अब मैनेजमेंट में क्या करोगे, ठीक है. स्ट्रक्चर तो बन गया, इतना समझ में आता है. इसको ठीक कैसे करेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू D1 stricture, ड्यू टू अ D1 स्ट्रक्चर. तो इसके लिए यू हैव टू डू अ स्ट्रक्चरोप्लास्टी, ठीक है. बट अल्ट्रासाउंड विल नॉट बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प हियर, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट पेशेंट है. अगर आप बोल रहे हो CHPS जो हमने पहले डिस्कस किया था, कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरोस्टेनोसिस, वहां पे अल्ट्रासाउंड वुड हैव बीन अ गुड मोडालिटी. यहाँ पे यू हैव टू विजुअलाइज द रीजन, क्योंकि सी इन एन अडल्ट, नो, wherever there is an obstruction you should always rule out malignancies first, especially in elderly patients, ठीक है. तो अपर जी एंडोस्कोपी एंड बेरियम मील फिट्स इट क्वाइट वेल हियर. तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन अगर D1 स्ट्रक्चर की वजह से मुझे स्ट्रक्चरोप्लास्टी करनी है, मतलब मुझे वापस से इसका जो कंटेंट है, जो जो उसका स्टेट है, आई हैव टू रिस्टोर इट बैक, ठीक है. तो प्रॉब्लम में समझा देता हूँ, फिर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सर्जिकल कंपोनेंट कैन वी डू. तो ये आपका स्टमक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम है, एंड ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी समवेयर अक्रॉस एट दिस पॉइंट, ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, because of the structure that is present, you will see the abdominal wall per se has become structure के चक्कर में the wall or the lumen has become narrow, ठीक है. तो this structure has caused this lumen to become narrow. तो मेरा ये जो passage space है ना, ये पतला हो गया, ठीक है. मेरा नॉर्मल स्पेस इतना वाइड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज बिकमिंग क्वाइट नैरोवर, इसीलिए कंटेंट आगे जा नहीं पा रहा है. तो मेरा काम क्या है, इसको वापस से रिक्रिएट करना. तो एक मेरे पास जो सर्जिकल ऑप्शन है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ओपन अप द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर इन दिस पर्टिकुलर फैशन. तो एक लॉन्गिट्यूडनल मैनर में आपने ओपन करना. जब आप लॉन्गिट्यूडनल मैनर में इसको ओपन करोगे, तो आई शो यू द कट एंड ऑफ द सर्फेस. तो ये आपका स्टमक हो गया, दिस वॉज द स्ट्रक्चर्ड एंड, जिसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो. और once you have given a longitudinal incision, you will see now the duodenum is split open. Now this is how you have
opened up the duodenum per se. ठीक है. So just to get the perspective, ये पूरा duodenal wall है, तो अभी हमने duodenal wall को खोल दिया. ठीक है. Just to get you things in a right perspective, this was the duodenal wall that we have just opened it up. Okay. Now all that you have to do is hold this end of the duodenum, pull, hold this end of the duodenum, you pull. Now when you pull the duodenum in this particular fashion, तो हमारे पास जो end result बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. This is the stomach that you have. The duodenum is being pulled in this particular fashion. और ये आपकी जो हमने इंसेशन बनाया था, so you have stretched the duodenum in this particular fashion. You stretch the duodenum in this particular fashion. So this is the entire duodenum that is present. So the stricture is still present. Now the stricture is present or confined to the wall here. All that you have to do is now suture this in this particular manner. Now you can see जो part narrowed था अब lumen ये wide open हो गया. ठीक है. Now you can see this much is the width of the lumen and this is the normal width of the duodenum, so it is maintained. यहाँ पे देखो width बहुत छोटा था. ठीक है. और normal width इतना था तो इसलिए problem था. अभी हमने width वापस बढ़ा दी है. ठीक है. So we have reopened up it completely and this is how you are going to perform the structuroplasty. इस सर्जरी का नाम बताएगा कोई? व्हाट इज द सर्जरी कॉल्ड एज? लॉन्गिट्यूडनल खोला, उसको खींचा और देन उसको वर्टिकली सुचर कर दिया. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द हाइनिकन म्यूक्लिट्स पाइलेरोप्लास्टी. This is what we call it as the Heineken Muclitz Pyloroplasty. This is what we call it as the Heineken Muclitz. This is what we call it as the Heineken Muclitz Pyloroplasty. Okay. Okay. Another option that you have for the surgical, one you have done is Heineken Muclitz Pyloroplasty. This is the first surgical option. The second surgical option that we have is going to be called as the Jablooplasty pyloroplasty. So what do you do in this? So in this second option, you have the stomach, you have the duodenum which is present here. There is a stricture which is going to be at this particular site. So now I don't want to overcome this structuroplasty and all. I want to create a bypass from the stomach directly into the duodenum, right? So what I'll do is I will now try to push the duodenum closer to the posterior part of the stomach. So this remains here. The structure remains at this position. And we're trying to push the duodenum closer to the stomach, right? Once you've done this, I'm going to open up the stomach here. I'm going to open up the duodenum here, right? Once you have opened it up, we are going to suture these two ones. The stricture remains in its position. We are least bothered. The content that is going to come will come from the stomach, gets from here, goes into the duodenum, and then continues across, right? This is what we call it as the Jablooplasty pyloroplasty, or it's called Jablooplasty surgery. Or this is what we call it as the Jablooplasty. This is what we call it as the Jablooplasty drainage surgery. This is your Jablooplasty drainage procedure. So two options that you have for a stricture. One, you can do a Heineken Muclitz pyloroplasty. Another one, you can perform a Jablooplasty. Another one, you can do a Jablooplasty. Okay? So this is with respect to gastric outlet obstruction. Okay? Okay.
The other normal one that you get, or I can say another complications that you have, is the structural deformity of the stomach. In the structural deformity of the stomach, there are two things. One, you can get a teapot stomach. Another one, you can get an hourglass stomach. Now, teapot stomach and hourglass stomach are usually seen. If you remember the modified Johnson's classification, or according to modified Johnson's classification, if you have a type 2 gastric ulcer, in a type 2 gastric ulcer, you have a teapot stomach. And in type 1 gastric ulcer, you have the hourglass stomach. Now, if you know what's an hourglass looks like, this is how an hourglass would look like. This is the shape of the hourglass. So basically the concept is very simple: narrow in the center, wide at both proximal and distal end, right? So if you remember the type 1 gastric ulcer, in a type 1 gastric ulcer, if this is the stomach, where is the type 1? It is at the angularis incisora. Let's say there's a giant ulcer that is present here. Now when this ulcer is going to heal, this is going to heal by fibrosis. Now when it gets fibrosed, you will see the stomach is going to get deformed. Now if this is the stomach which is here, now because of the stricture, this is going to become like this, and the rest of the stomach will continue to go like this in this particular manner. So this is because of the stricture that is occurred. So when you look at this, there is wider portion in proximal, narrow in the center, then wider portion in the distal end. There, wide, narrow, and wide. So this mimics a classical hourglass appearance. A classical hourglass appearance. Now, when I say teapot stomach, in a teapot stomach, a teapot is narrow at the base, I mean at the top, wide in the center. Again, it is going to be narrow at the base, right? This is how a stomach should look like. So, in a type 2 gastric ulcer, you have one ulcer in the body, the other one is going to be in the first part of the duodenum. Now, let's say we are going to keep those ulcers here. Now, there's a big ulcer which is present here. There's a big ulcer which is present in this duodenum. Let's say both of them are going to heal. When both of them are going to heal, this is going to result in fibrosis here. This is going to cause fibrosis here. Now, because of the fibrosis, you see this part of the stomach is going to move inwards, and this part of the duodenum is going to move inwards, right? That's the fibrotic element, right? So you'll see the stomach has become like this. Because of fibrosis, the duodenum has also become like this. So the end result that you will see, because of the fibrosis, this is how you have. So there are two fibrotic components. One is here and another one is here. So you can see narrow on top, wide in center, narrow on bottom, gives you a classical appearance of teapot stomach, right? Gives you a classical appearance of teapot stomach. So these are the two specific complications that are going to be related to peptic ulcer disease, right? So we try to cover extensively all the complications that might be there in the peptic ulcer disease. Okay. So this is with respect to the complications associated with peptic ulcer disease, right? Now we'll talk about the complications which are seen in surgeries associated with peptic ulcer disease, right? So we'll talk about complications in Billroth surgeries. Complication associated. See, we have already spoken about extensively about the Billroth surgeries. If you have remembered it, where is it? Where is it? It's here, right? So you can see in the Billroth surgeries, either way you're removing a part of the stomach, right? So when you talk about the Billroth surgeries,
the complication associated in the Billroth surgery, right? Now, when you talk about the Billroth surgery, especially when you're removing more than two-thirds of the stomach, you are now going to cause malabsorption. It will result in malabsorption. It is going to uh, see parietal cells which are present in the stomach, usually in the body of the stomach, they are responsible for B12 absorption also, right? Now, because of this, there will be B12 deficiency. Now, this B12 deficiency is going to result as megaloblastic anemia. This will be associated with megaloblastic anemia. The other components, it will be causing iron deficiency. It will also be causing calcium deficiency also, right? The chief cells which are responsible for absorption of fat, right? They break down the fat, they'll also not be there. So there will be excessive loss of fat. That is what the malabsorption is. So there is megaloblastic anemia, there is iron deficiency, there is decrease in calcium as well. There will be hypocalcemia. Along with that, it will also be associated with anastomotic ulcers, which are also called as the stoma ulcers. They are going to be associated with stoma ulcers. Now, one thing that I would never want to see on a Billroth surgery, especially in Billroth 2, is what we call it as a duodenal stump blowout. Now, duodenal stump blowout is a complication that is specific to Billroth 2 surgery. That is specific to Billroth 2 surgery. Now, if you remember in Billroth 2 surgery, if this is the stomach, we have removed it two-thirds, only one-third is left behind. We have bypassed the duodenum, we have taken the loop of the jejunum, and we have anastomosed the stomach and jejunum, and this was maintained in continuity, right? Now, there are two stumps which are created. This was your duodenal stump, and this is the anastomosis between the stomach as well as the jejunum that is present. We also remember that the bile duct which is going to be present here is going to open out to the second part of the duodenum, and that is going to be maintained as it is. So this is where the bile is going to excrete, right? Now, due to when you are done in anastomosis is also a wound, and because there is this wound which is present at this anastomotic site, there could be edema. Now, because of the edema, this site is going to get blocked. Now, as it is going to get blocked, all the bile that has been excreted here, the bile is trying to go out. Now, because it's getting narrowed here, it gets stuck, right? The bile is not able to go because of the extensive edema that is present. This end of the loop is getting blocked. So all the bile which is present here will start to pool across here. And as more and more amount of bile will pool, what is going to happen? The pressure inside, I can say the pressure inside this lumen will increase, and suddenly this is going to burst open. When it bursts open, this is what we call it as a duodenal stump blowout, right? Now, usually the duodenal stump blowout is seen in which day? This is most commonly seen. This occurs usually on the 4th post-operative day. It usually occurs, मतलब ये जब होता है, ये usually 4th post-operative day में होता है, ठीक है? तो बिलरॉथ 2 सर्जरी में डिओडिनल स्टंप ब्लोआउट क्यों होता है? क्योंकि जैसे आपने देखा है कि डिओडिनल स्टंप जब जेजुनम के साथ जा रहा होता है, एनास्टोमोटिक साइट पे इन्फ्लेमेशन तो होता है, तो एडिमा तो होगा. एडिमा की वजह से वो वाला जो ल्यूमेन है ना, वो जब वो एडिमेटस टिश्यू हो जाती है ना वहां पे, तो ब्लॉक हो जाता है. जब ब्लॉक हो जाएगा तो बाइल तो नॉर्मली एक्सक्रीट करेगा, बाइल आगे नहीं जा पाएगा, तो पूरा डिओडिनम में पूल होकर ना, तो डिओडिनम के अंदर पूरा प्रेशर भरने लगता है. और जैसे ही वो प्रेशर एक सर्टेन पॉइंट पे आता है, क्योंकि अभी तो रिसेंटली एनास्टोमोस ना, अभी धीरे से सूचो मारा हुआ है, वो पूरा बर्स्ट के निकलेगा, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज डिओडिनल स्टंप ब्लोअर. यूजुअली ये 4th पोस्ट ऑपरेटिव डे में होता है, ठीक है? इसका एक और नाम है, देखो अब ये जो लिम्ब जा रही है, जाने वाले को एफरेंट बोलते हैं, ठीक है? तो एनास्टोमोसिस साइट के लिए ये एफरेंट लिम्ब होगी, और एनास्टोमोसिस से जो दूर जा रही है एग्जिट वाले को इफरेंट लिम्ब बोलते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द इफरेंट लिम्ब, है ना? तो स्टंप कहां ब्लो कर रहा है? एफरेंट लिम्ब में.
तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द afferent limb blowout. This is also called as the afferent limb blowout. So obviously you have to re-explore, repair it, put a drain and come out. All these are going to be your initial component. ठीक है. Apart from this, when you have malabsorptions, you have megaloblastic anemias, you have iron deficiency anemia, you have calcium deficiencies, anastomotic ulcer, duodenal stump blowout. But इन सबसे परे एक और कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम. अभी जो डंपिंग सिंड्रोम है, इट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन यू आर डूइंग अ बाईपास टू जेजुनम. ठीक है. सो दिस इज usually seen in Billroth 2 surgeries. This is seen in gastrojejunostomy. चाहे वो Roux by भी हो. These are the two conditions where you will usually see a dumping syndrome. देखो डंपिंग सिंड्रोम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, आप नाम है बेटा, जो एनास्टोमोसिस की तरफ जा रहा है उसको एफरेंट बोलते हैं, जो दूर जा रहा है उसको ईफरेंट बोलते हैं. पास वाले को एफरेंट, दूर वाले को ईफरेंट. तो अगर एक साइट है, whatever is approaching that side is afferent, और जो उस साइड से दूर जा रहा है, एग्जिट ले रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज efferent. उतना ही कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा नहीं है. ठीक है. अच्छा, डंपिंग सिंड्रोम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये, इट इज बिकॉज ऑफ रैपिड ट्रांजिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू बावल लूप. ठीक है. इतना ही कॉन्सेप्ट है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो डंपिंग सिंड्रोम ना हमारे पास दो वैरायटीज के हैं. एक हम बोलेंगे कि अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है, एक आप बोलोगे कि अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है, दूसरा आप बोलोगे कि लेट डंपिंग सिंड्रोम है. एक आपका अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है, दूसरा आपका लेट डंपिंग सिंड्रोम है. हाय, गुड इवनिंग राधेश्याम. ठीक है. अभी जो अर्ली और लेट डंपिंग सिंड्रोम है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इसके लिए जो पैरामीटर्स हम देखेंगे, एक तो आपका टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, ये कब प्रेजेंट करता है. वन इज द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. व्हाट आर द फीचर्स दैट यू विल सी. इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, और दूसरा रिलीविंग फैक्टर क्या. राइट. सो टाइम ऑफ प्रिपरेशन, क्लिनिकल फीचर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एज वेल एज रिलीविंग फैक्टर. देखो, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम का द बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फूड स्टमक में है वो जल्दी 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 जाके जजने में पहुंच जाता है. तो जो नॉर्मली फूड को जाना चाहिए था डिओडनम में, वहां पे ब्रेक डाउन होता, अब्सॉर्ब होता, तब जजनम तक पहुंचता. अब ये फूड स्टमक से डायरेक्ट जजनम में चला गया, विच इज रिच इन शुगर. इट इज हाइपर ऑस्मोलर काइंड, क्योंकि शुगर हाइपर ऑस्मोलर होता है ना, तो इट विल ड्रॉ द वाटर टुवर्ड्स इट. तो अर्ली में टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन बोलते हैं कि जो सिम्टम्स होंगे वो विद इन 20 to 30 मिनट्स में प्रोड्यूस करेंगे. लेट डंपिंग सिंड्रोम की जो सिम्टम्स है वो 2 घंटे के बाद आएंगे. ठीक है. तो क्योंकि अर्ली में क्या है, हाइपर ऑस्मोलर काइम पहुंच गया है, तो वाटर विल बी ड्रॉन इनटू द जेजुनम. तो यहां पे पेशेंट प्रेजेंट करेगा पोस्ट पैरेंड्रियल डायरिया के साथ. ठीक है. लेट में क्या है, 2 घंटे के बाद इट कॉजेज एक्सेसिव सर्ज ऑफ इंसुलिन, और जब इंसुलिन की ड्राइव बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली पेशेंट बिकम हाइपोग्लाइसीमिक. तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिक फीचर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम खाना खाने की वजह से होता है. लेट डंपिंग सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज और वर्कआउट, एनीथिंग. ठीक है. रिलीविंग फैक्टर फॉर एन अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, इट इज टू लाई डाउन सुपाइन. एंड रिलीविंग फैक्टर फॉर अ लेट डंपिंग सिंड्रोम इज फूड. ऑब्वियसली अगर हाइपोग्लाइसीमिक है तो खाना खाओगे तो बेटर लगेगा, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लेट डंपिंग सिंड्रोम. ठीक. So when you look at the comparison between the early and the late dumping syndrome, these are the things that you have to take into consideration.
So this is your early and the late dumping syndrome. Okay. So this is all that you should know in the context of complications associated with your Billroth surgeries. Okay. Now, vagotomies के अपने complication है, but they have mostly in truncal vagotomies. We have already discussed it. Truncal vagotomy वाले patient में you have gastric stasis because of celiac branch का जो compromise है, उसके लिए we have already discussed कि आपको drainage procedure करना पड़ेगा. We have already discussed it. So you can see gastric stasis that occurs in your I would say the vagotomies, truncal vagotomy. For that you have to do a drainage procedure. वहाँ पे हमने वही mention किया था, हाइनिकन म्यूक्लेट्स कर सकते हो या फिर ये जाबुलोइड स्पाइरोप्लास्टी कर सकते हो, बोथ ऑफ देम. ठीक है. एक्चुअल क्लिनिकल डिफरेंस बिटवीन द अर्ली एंड लेट, अर्ली वाला जो पेशेंट है वो आपको डायरिया के सिम्टम्स के साथ आएगा ना. पेशेंट बोलेगा खाना खाते उसको वॉशरूम जाना पड़ता है. और लेट डंपिंग सिंड्रोम वाला जो पेशेंट है वो बोलेगा सर खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर इतना भूख लगता है एंड ऊपर से इतना डिजी लगता है कि आई कोलैप्स. हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, सर घूमेगा, पेशेंट को मतलब ये पैल्पिटेशंस एंड ऑल सिंपैथिक ओवरड्राइव में चला जाता है ना. तो हाइपोग्लाइसीमिक फीचर्स है, पेशेंट लगेगा इतना वीक रहता है कि थोड़ा बहुत शुगर वगैरह कुछ खाता हूं आई फील बेटर. ठीक है. सो क्लिनिकल डिफरेंस यही है ना कि बेटा अर्ली वाले को डायरिया होगा, लेट वाले को हाइपोग्लाइसीमिया वाले फीचर्स होंगे. ठीक है. सो दिस concludes your entire discussion on peptic ulcer disease. ठीक है. तो हमने स्टमक में जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर डिस्कशन ऑफ स्टमक, दैट इज अ पेप्टिक अल्सर डिजीज, वी हैव कंक्लूडेड. Now, from tomorrow onwards, we'll start with the other topics which are relevant in stomach. For example, MedEd disease. Okay, we'll talk about gastritis, which is another phenomenon. We'll start with an upper GI bleed, which is a separate component. Then we'll talk about gastric cancer, gist and all that is the residual topics which are left in the stomach. एक बार वो खत्म हो जाएगा तो I think another 4 episodes we'll be able to finish stomach. फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना intestines. ठीक है. So stay tuned until then. Thank you so much for joining us today. I know it was a little bit थोड़ा जल्दी करा दिया class, but had to be done. Until then, have fun, take care. आज अच्छे से मैच देखना, आरसीबी को सपोर्ट करना. ठीक है. और जब जीत जाए तो सब मिला के एक साथ we'll celebrate. Until then, thank you so much for joining. We will see you back tomorrow at कल नॉर्मल टाइम पे करेंगे रात के 9 बजे. Until then, bye, take care, goodbye.